ultimately, as it has happened across the world, and we have actually followed the Western principle of fill, dump, forget. We want to generate all the waste that we want, but we do not want that waste to be seen. And therefore, landfills have come up as if generate and forget mentality, and therefore you have landfill sites which are higher than mountains. The landfill, often called Bandhwari, is named after the village whose land it came up on. It's impossible to miss this mountain of waste while travelling on the Gurgaon-Faridabad road near the Delhi and Haryana border. Located in the ecologically sensitive Aravalis, the landfill gets 2,000 tons of unsegregated waste daily from Gurugram and Faridabad. It has grown over 40 meters tall today and shows no signs of halting. First, if we talk about the solid waste management rules only, it is the responsibility of the generator of the waste that the waste are not mixed. You segregate the compostable waste separately, plastic waste separately, and if you have some kind of a hazardous waste in your household, you should keep it separately. Now, if you go to the Bandhwari landfill, at that time when we filed the case, it was everything mixed. Even the biomedical waste is mixed with this kind of waste. So it's kind of a complete failure from the beginning to the end. It's complete non-compliance. Even though it's existed for over 10 years, the mountain came into public consciousness only when the waste started to tower above the landscape. See, it is out of sight, out of mind. सबका घर से कूड़ा निकल गया. It is not my problem. It's not my headache. And they chose a place which is actually out of sight. It is right inside the jungle, away from everybody's sight, and also a mining pit. So for that 250 feet deep pit to fill up takes some time. So it must have taken maybe a year or two so that it reaches this ground level. And then when it started collecting on top is when people started noticing. So 2015 somebody noticed it. He went to NGT. And I think after that it started building up after that. Now it is so big that nobody can miss it. Nobody can miss it. People standing at Ghata can also see from Ghata, like it is 5 kilometers far. In monsoons, when the wind blows, trust me, we can smell the stench till here, like 5 kilometers also away from the landfill. Whenever we are free and my son is like, when his holidays and all, we keep going inside the Ravlis. And this is the first thing you spot when you go on that Gurgaon-Faridabad road. Then that's when I started reading up about it also, and I realized what is happening and how the waste management is really a mess in the city and all. We wrote to the Pollution Control Board also, we wrote to CPCB also, we wrote to NGT also. Finally, a testing was conducted over here. From 14 points they collected groundwater samples, and turns out our water is contaminated. See how this landfill is different from the other 3 landfills of Delhi and Delhi NCR area is, this is forest area. This is Aravalis, which has like a blanket protection from Supreme Court of India. So this is how it is so different from the other landfills. And there's another thing to it. Like I said, landfill is on a higher elevation and the rest of the villages are a little lower. So I have a lot of data where test reports saying that this is like toxic leachate which is being thrown out. And it must be lakhs and lakhs of liters. I mean, there are pools and pools of leachate which collects outside. So when this leachate runs off from the landfill, it goes down towards the villages. And the villages have some surface water bodies which get contaminated with this, and their animals and the cattle, they all drink that water. हमारे गांव में आज से 15 साल पहले कोई मच्छर नहीं, कोई मक्खी नहीं, कुछ नहीं है। जैसे कि मतलब लाइट की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि बोले लाइट आ रही है नहीं आ रही है। खत्ता सरपंच जयपाल था हमारे गांव में 2004 में। तो उस टाइम पे खत्ता जैसे नगर निगम वाले पूछते हैं कि भाई कहीं भी सरपंच से कोई जगह ले ले, तो हमारे सरपंच ने जगह गांव से बिगर पूछे, गांव की कोई सहमति नहीं थी। गांव ने तो खूब जोर लगा लिए, कोई सुनता ही नहीं है। कहीं भी धरना भी दे लिया, अभी एक बार रैली हुई, दुर्शन साहब आए हो सोने, लेकिन वो भी डिप्टी सीएम बन गया, आज तक उसने भी ना कोई बात उठाई।
खत्ता के बारे में जो आता हो वोट मांगना आता हो, बताओ कहीं भी किसी के आते हो तो मच्छर डटन दिन रोटी न खाई जा मक्खिन के मारे। पानी अब बोर का पानी नहीं पी रहे, फिल्टर को पी रहे, मोल ला के क्या फायदा, पानी खराब होगा, पियो ही नहीं जाता, बदबू आती है। अब ये बोरिंग है, इस बोरिंग का हम पानी भरते हैं, पानी भर लो ड्रम में भर के 2-2.5 घंटे बाद में जब उसमें मड़ाई आ जाती है, पानी साफ है तो सब कुछ साफ है, पानी साफ नहीं है तो कुछ भी साफ नहीं है। बारिश के टाइम में रोड के साथ ही रेता थे, कहाँ का रेता रहे, क्या खाली कर रहे, प्लांट से बाहर खाली कर रहे। It was not that they have set up any kind of a boundary wall and then they have to set up whatever is required like a buffer zone. If you see the Central Pollution Control Board guidelines for setting up a landfill, they have said that 200 to 500 meters from the boundary wall there has to be no development zone. कहीं भी गिर जाते हैं, रोड पर रेता जाते हो, भैंस गाय मुंह मारती है, खाती है तो मर जाती है। लाख रुपए की भैंस आ रही है, गाय आ रही है 50-50 हज़ार की। और वे वहाँ से खा के आ रही है, उसका दूध काटेंगे हम, आगे सप्लाई करेंगे तो सप्लाई में भी दूध जाएगा हमारा, अगले में भी देखेंगे कहाँ से आ रहा है दूध। पर हमारा कौम पूरा परेशान है, ये कह रहा हाथ जोड़ कर जी ये खत्ता हट जाना चाहिए। हमारे तो बिल्कुल नजीक है, हमें तो जैसे घर तक निकलेंगे बदबू गट मुँह में आएगी। अब ये सीए मर जाते हैं, विंडो खोल के थोड़ी निकलते हैं यहाँ से, काफिले के साथ जाते हैं, सिर्फ शीशे बंद होते हैं। अब बीमारी ऐसी चल रही है, बुखार चल रहा है, काफ़ी लोग पड़े बुखार बीमारी में, सबसे ज़्यादा कैंसर में बहुत लोग मर चुके हैं। बीमारी ये नहीं है बंधवाड़ी गांव में, मांगर गांव भी है, बालेवास, डेरा, फतेहपुर, 5-7 गांव लगते हैं, बीमार सब में चल रही है बीमारी। The landfill has become a source of employment for some in the neighboring villages. So while communities bear the brunt of the landfill, many remain hesitant to speak directly against it. इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद लोग बात करने से क्यों झिझकते हैं? ये तो आपस में कम्युनिटी का वो है कि एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना बनती है। यानी आज एक बात बताओ, हमारा गांव कोई नगर निगम में आने लायक नहीं है, कोई बिजनेस है हमारे गांव में? कुछ नहीं, नहीं कोई किरायादारी है, नहीं कुछ भी नहीं है हमारे गांव में। ये देखो अपने ढोर डंगर बांध रखे हैं, इन्हें तो गुजारा करो। अब आ गए ये नगर निगम में गांव आगा, लाइट का खर्चा बढ़ेगा, कल को ये नगर निगम पानी देगा, घर घर में पानी पहुंचाएगा, तो उस टाइम पे भी ये मीटर लगा देंगे, पानी का भी खर्चा बढ़ेगा। बंदा कर रहा है 10,000 की ड्यूटी, 10,000 की ड्यूटी में क्या अपने बच्चे ने लिखाएगा, पढ़ाएगा, बिजली का बिल भरेगा, पानी का बिल देगा, क्या करेगा उसको? तो ये जो आप कह रहे हो इसके आधार पे तो फिर मजबूरी में जो गाड़ी चला रहे हैं वहाँ तो ठीक ही है। और क्या करेंगे, बच्चे तो पालने, अब ढोर डंगर में तो गुजारा नहीं होता, ठीक है। उसमें ये दिक्कत होती है कि भाई तेरा तो महीना का पेमेंट आ रही है, तो ये गांव तो मर रहा है, उस चीज़ को नहीं सोच रहे। At the end of the day, most of the environmental problems are also economic problems, and that we need to understand very clearly. So this landfill site has two sides. One, a part of the community which is benefiting out of it in terms of jobs and employments and contracts, and the other side which is not economically benefiting but are also suffering. The first party is also suffering, but there is something that they are getting in return. This always happens in most polluted site. ये गांव दिल्ली की बाउंड्री के पास है, आसपास जो लिविंग जो सिस्टम है वो बहुत स्टैंडर्ड क्लास में पहुंच गए हैं, तो लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ गई हैं। लेकिन कूड़े से तो 4-5-6 साल की ज़िंदगी हो जाती है। तो 50 साल के बारे में सोचता कौन है? सरकार 5 साल के लिए है, प्लान जो है 10 साल के लिए है, तो लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये 50 साल के लिए सोचेंगे, 100 साल के लिए सोचेंगे? उनको तो आज जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसमें वो अपना सॉल्यूशन ढूंढ रहे।
One important aspect which people are not talking about is what economic alternative I am going to provide to the affected community. Because their original livelihood is gone. They have built their livelihood around this polluting activities. Now we are saying we need to close it because it has huge environmental and health implication. बंदवाड़ी के समस्या को गांव तक सीमित रखना सही है? नहीं, सीधी सी बात है, हवा और पानी जो है ना वो सबका साझा है, चाहे कोई शहर वाला है या गांव वाला है. Communities after communities are rejecting landfill sites. For example, Delhi Municipal Corporation has been trying to get land in Haryana for years now. No one is giving them an inch of land. Neither they will. There are no easy answers, and therefore people always prefer backyard because backyard is forget. Front yard is we are going to see every day. But that's where it is. In front of our front yard is the solution for waste. There is no other solution. The plans to treat the existing waste at the energy plant at Bandhwari are yet to be implemented fully. In the meantime, the waste mountain rises higher. The next video in the series will explore the solutions at play to tackle the issue. A plan to convert the waste to energy and an everyday front yard solution: waste segregation.